अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाजरीन, हम जब भी दो ममालिक के माबैन अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने की बात करते हैं तो उसके दो शराइत या असर हाजिर का तकाजा ये है कि उसकी वजूहात होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं और बिलखुसूस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब दो ममालिक के आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं या एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है, उसके बाद उनका तायुन किया जाता है और उन पैरामीटर्स का तायुन किया जाता है उन ताल्लुकात का। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती की मिसाल है उसका कंपैरिजन अगर हम पूरी दुनिया के साथ करें तो उसको एक इनफरादी हैसियत है। यहां पे कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो अब की बात है, जब प्रेसिडेंट चाइनीज यानी शी जिनपिंग जब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर पे, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर पे जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तो एक पहलू है। लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है इसकी अजीम मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको भी पता है कि शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है। लेकिन ये दोस्ती मजीद मजबूत और मरबूत तर होती जा रही है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की कभी हम बात करते हैं, कभी हम पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है हमारे दुश्मन ममालिक, जिसके लिए हम हाइब्रिड वार की बात करते हैं, पहले 4th जनरेशन और फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा चाइना का एक अच्छा दोस्त रहा है। बैनुल अक़वामी दुनिया, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो या पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मुहिम जोई हो, चाइना ने बड़े मौसर अंदाज से, बड़ी खुश असलूबी से उसे काउंटर भी किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड बेल्ट एंड रोड फोरम जो हुआ, क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई और आगे पाक चीन दोस्ती जो है उसकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है और मजीद कौन सी राहें हमवार होने जा रही हैं। तफसीलन बात करते हैं। मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं, प्लीज। Assalamualaikum, my name is Aru. Welcome to Cpec Time. Today we have a special guest, Madam Zhao Baige. He is the chairman of the BII. And another name is Madam Cpec. मैडम सीटेक और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी सेनेट CPI। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तशरीफ आवरी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वील स्टार्ट फ्रॉम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, किस तरह देख रहे हैं सेकंड बेल्ट एंड रोड जो फोरम हुआ, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, 7 GCC 6 GCC इकोनॉमिक जोन्स की बात की गई, उनका तायुन भी किया, मुख्तलिफ प्रोविंस में दो इकोनॉमिक जोन्स की भी बात की गई। आप खुद वहां पे मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। कितना फर्क था इस सेकंड बेल्ट रोड फोरम में और पहले वाले में? उसमें तो बड़ा बीजिंग समिट जो है पूरी दुनिया में उसके चर्चे थे। थोड़ा सा कंपैरिजन करें, कितना मुख्तलिफ था और कितना बेहतर था। और तारुफ करवाते चलें। आई थिंक यू स्टार्ट योर न्यू गेस्ट, इंट्रोड्यूस प्लीज, देन वी विल Okay. We have a guest DCM Li Jianzhao. He's the third time come to our program, and also he fourth time on the Cpec. डिप्टी एम्बेसडर का तारुफ जी करवाया है आरू ने, और ली जांजू हैं जो कि इस वक्त डिप्टी एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारी दोस्ती में वैसे भी काफी मुलाकातें भी, हम इंटरेक्शन भी हमारा होता रहा है, वहां पे भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुशाहिद साहब, मेरा वही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस और थोड़ा कंपैरिजन कर लें माजी से, कितनी तेजी से जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच मिस्तांग। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि आज चाइना से भी इस महफिल में दो बड़े एक्सपर्ट्स लेके आए हैं, डॉक्टर जाओ बाइगा, जिसे मैं उनको कहता हूँ कि मैदाम CPEC, क्योंकि इनकी बड़ी कोशिशें हैं, काविशें हैं, और उनके साथ जो बैठे हैं वो भी जाओ हैं, जाओली जियान नायब सफीर, और वो भी एक्सपर्ट, दोनों CPEC पर बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं। तो ये दोनों जो फोरम थे, पहला हुआ था 2017 में, वो शुरुआत थी, उसमें कोई 27-28 हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे। ये जो दूसरा वाला हुआ है 26-27 अप्रैल को बीजिंग में, इसका एक बहुत वसी पैमाने पर था। 5000 लोग नुमाइंदे 150 ममालिक और तंजीमात से आए, जिसमें से कोई 37 सरबराह मुमलिकत और वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम भी मौजूद थे, और ये एक स्केल ही और थी। और इसकी हमारे लिए जो अहमियत ये है कि CPEC पहला फेज मुकम्मल करके कामयाबी के साथ अब दूसरे फेज में चला गया है। सही, पहले फेज में क्या था, सड़कें बनी हैं, बिजली का बहरान खत्म हुआ है, गवादर की बंदरगाह को जिंदा किया गया, ट्रेड कॉन्वॉय, ट्रेड वालों देखा जी, वो गिलगित टू गवादर वेस्टर्न रूट की बात भी हुई। फिर थर कोयले की हम बात करते थे, अब थर में सिर्फ कोयला भी नहीं निकल रहा,
کوئلے کو اب بجلی میں بنایا جا رہا ہے اور بجلی کو نیشنل گرڈ میں ڈالا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 5 سال میں اب کوئٹہ سے گوادر کا راستہ 8 گھنٹے کا پہلے 2 دن آلموسٹ لگ جاتے ہیں. تو ایک بڑی ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے. 70,000 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چین میں اس کو پڑھ رہے ہیں اور ڈفرنٹ ٹریڈ کوریڈورز کنیکٹیوٹی ملک کے اندر ہوئی ہے. صحیح. سیکنڈ فورم میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک تو سوشل سیکٹر ورکنگ گروپ بن گیا ہے. صحیح. ترجیحات میں یہ آ گیا ہے. پھر دوسرا ہے اسپیشل اکنامک زونز. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے ایک ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن. ٹھیک ہے. اب پہلی جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ خیبر پختونخوا میں رشکائی میں ہوگی. ایک اور ہوگی سندھ میں دھابے جی میں. ایک فیصلہ آباد میں پنجاب میں ادھر ہوگی اپنا فیصلہ آباد میں تھرڈ والی جو ہے. اور پھر اسلام آباد میں بھی ایک پلانڈ ہے. اور گوادر میں تو آپ کو پتا ہے کہ بندرگاہ کے ساتھ ہے اسپیشل ایریا بنا لیا انہوں نے. تو یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جو سوشل سیکٹر میں چائنا نے ہمیں $1 ارب $1 بلین کا گرانٹ دیا ہے. اور اس میں 6 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں جس میں تعلیم، صحت بھی ہے، پاورٹی ایلیویشن بھی ہے، واٹر اینڈ اریگیشن بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہے. صحیح. اور ان 6 ایریاز میں 27 پروجیکٹس بنیں گے. صحیح. جن میں عوام کو فائدہ ہوگا، لوکل کمیونٹیز کو. اچھا مشاہد صاحب، ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے کیونکہ پھر آرو جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، ہمارے دیگر مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گی. گوادر کے حوالے سے بالخصوص جو بات جس کو مرکزی حیثیت بھی حاصل ہے اس پورے سی پیک کے اندر، اور خاص کر کے ساتھ جو وہاں پہ بھی مغربی روٹ کے حوالے سے جو بات کی جاتی تھی، یہ بتائیے گا کہ 10 برتھ کی باتیں کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ 10 برتھ بنیں گے اور 7 لاکھ ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگوں کو روزگار ملے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا، یہ مکمل پورا پروجیکٹ. تو یہ بتائیے گا کہ اس برتھ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اور ایئرپورٹ کے حوالے سے جو بالخصوص بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس پہ کام کی اشد ضرورت ہے. اگر ڈیپ سی پورٹ ہے ہمیں مزید برتھ کی ضرورت ہے، کیپیسٹی بہت کم ہے. گوادر پورٹ کی بالخصوص حوالے کی بات کرتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. گوادر کے حوالے سے کچھ بڑے بنیادی فیصلے ہو گئے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بھی فرمایا اس کی اہمیت بڑی ہے. اگر سی پیک فلیگ شپ ہے اور پائلٹ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، تو گوادر جو ہے پورٹ وہ سینٹر پیس ہے سی پیک کا. صحیح. سینٹر پیس ہے، وہ کی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس کا لینڈ لنک بھی ہے اور سی لنک بھی ہے چائنا کے ساتھ. اور گوادر میں اب نیا ماسٹر پلان بن رہا ہے جس میں برتھ بھی شامل ہوں گے. اور پچھلے سال 10 لاکھ ٹن کارگو اٹھایا ہے گوادر میں. اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا. چائنیز گورنمنٹ نے ایک بڑا جنرس گرانٹ دیا ہے، کوئی $280 ملین کا تحفہ ہے. اٹس اے گفٹ فرام چائنا. گوادر پورٹ کا ایئرپورٹ جو ہوگا اور وہ ہیوج ایئرپورٹ ہوگا، اس کی اب تیاری شروع ہو گئی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل بھی ہیں، انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر کا بھی انتظام ہو رہا ہے اور بجلی کا 300 میگا واٹ پاور پلانٹ بھی لگے گا. اکنامک زونز کو ڈیولپ کرنے کے لیے فوری طور پر کیا انیشیٹوز لیے گئے ہیں؟ اکنامک زون بالخصوص ویسٹرن سائڈ کی جو بات کریں کیونکہ ان میں بلوچستان میں 2 جو ہے اکنامک زونز کی بھی بات کی گئی تھی، وہیں سے ابھی تو شروع ہوگا نا جی گوادر سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے رشکائی. دونوں پسماندہ علاقے ہیں، ایک بلوچستان ہے ایک خیبر پختونخوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پوری فیزیبلٹی تیار ہے. چائنا کا ایک ادارہ ہے، کمپنی ہے CRBC، چائنا روڈ اینڈ بلڈنگ کارپوریشن، وہ رشکائی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس کو چلائے گی. صحیح. اور ہمارا کیا ہے ارادہ یا کیا سوچ ہے کہ جو چائنا سے ری لوکیشن ہونی ہے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی، اس کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں جوائنٹ وینچرز ہوں گے، ری لوکیشن کی بھی ہوگی. اور اس کے لیے فاسٹ ٹریک پر ہمیں 1 ونڈو آپریشن کرنا ہوگا. صحیح. تو جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، لال فیتا ہے، وہ کاٹنا پڑے گا تاکہ ٹھک 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 صحیح فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. پلیز. Okay, Madam Zhao, I want to have a question for you. And on the Xi Jinping, Chairman Xi Jinping, One Belt One Road initiative. And China make the Pakistan as the main project of the One Belt One Road initiative. And what China want to bring for the Pakistan? Thank you very much for your question, and a very good opportunity the first time we come to the Cpec time, because we really want to take this opportunity not only talk with the Pakistan people but also for the whole world. Yes. As you know, just finished the Band Road
forum, President Xi Jinping and also the Chinese group doing a very good summarization about what happened in the past 5 years, which is important. And also in this forum, raised the very, very important issue is the future of the Belt and Road Initiative, because this is really important. We are not only look at today, but also look at tomorrow. This is really important. This is why under the two ministries from Pakistan, the China Foreign Ministry, we formed this very important meeting in your country, Islamabad. We want to set up a 3 sessions. Number 1 is government-to-government dialogue, because we really want to do the policy analysis, see whether the policy is good or not, come to the right direction. The second one, we will come to the think tank dialogue, because when we talk about the future, we should know what will happen in the future, not only economically, politically, socially, and ecologically. Number 3, it's important business-to-business dialogue, because without the company, no development. So these are 3 parts. We take them as a very, very important example. And of course, the Cpec, especially Pakistan-China relationship, become like a model. This model will show the whole world what will happen. So in the past 5 years, from my understanding, because every 2 years I visit Pakistan. Thank you, Mr. Cpec. You give me a lot of chance to see. I'm a Madam Cpec. We have the chance to even look at what I'm seeing. I just want to talk a little bit. I remember 3 years ago when I come to the Islamabad, the airport. Today is a total change. It's like a very modern city. I'm right? What is the reason behind it? I think the reason is not only because of the support from Chinese side, but the most important thing is the Pakistan people. Because they want development. They want quickly development. So this one gives a very good opportunity for your country. The second one, this is what I'm saying, after 5 years, I see the people more active. You can see a lot of cars and trucks in the road. At that time, I visited several cities like Islamabad, of course, Lahore, and then Karachi and Gwadar. I see now it's very busy. Everybody in a hurry, because in a hurry for the development, of course, in a hurry for money, for the business, for their life. I feel very excited. In the future, maybe we will do some study, investigation to see whether the people per capita is increased. And until now, I have no data to show that. I will talk with the think tank group. We'll do some give the evidence to show that. And the final one, the most important thing, I find those societies were more open. I remember in Gwadar Port when I visited, they have 600 families. You bring me to there, and when you talk with the ordinary people, they just feel very shy. And now it's very open. They just like international globalization. You understand me? So I feel very happy because the internal power, the internal force, were mostly important for your country, for your nation. This is what I'm saying. Thank you very much for your question. Yes, please, Naro. So, Madam, this time you bring the business team coming, and what they want to do in Pakistan? If you listen to President Xi's presentation in the forum, 2 points I think is very important, because he mentioned the high quality development. This is one. He also mentioned the innovation, even set up the foundation for the innovation. This is important, because a lot of criticized talk, oh, China put all this, classical industry to our country or to the other place. And after phase 1, we set up some infrastructure system. Now we will come to the high quality and the new development stage.
when I talk about the new development stage, we have to think about the fourth industrial revolution. Because for China, we only spent 4 decades bring China from the countryside country come to today. You can see, of course, Beijing, Shanghai, or Shenzhen. But the most important thing is internally, the Chinese become strong because their capacity for the innovation become very strong. They created the job, they created the industry, they created so many things for the GDP, of course, the economic development. So I think we are the brother with Pakistan. We should bring all these experiences to your country, because brother and sister, we should work together and make, like President Xi mentioned, we should have the common sharing the benefit together. So I think if you ask me what is the most important thing for the second forum, this one, just like the beautiful or very important, how can I say, the announcement for the whole world. We want line with Pakistan, line with all the developing countries come to the same direction. Thank you. I just want to add one thing to what Madam Zhao Baiga said, and she's very correct on that. President Xi Jinping in his speech also mentioned green development. Yes. Green development. Sustainable. Yes. Sustainable, ecologically friendly, green and clean, BRI. And that's a very key component now. Yes. And that's also a priority in Pakistan, climate change, about environmental degradation and so forth. So this is another very key component. Yes. अच्छा, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा हम अपने देखने वालों को और सुनने वालों को जो पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त जो है ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, मैडम ने बहुत शुक्रिया अदा किया, मैडम Cpec ने, उन्होंने मिस्टर Cpec का भी शुक्रिया अदा किया सैयद साहब का, और साथ में उन्होंने कहा है कि 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी उन्होंने बात की, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है इसलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। एक तो इंटरेक्शन को मजीद मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बात की है, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद डेवलप करना चाहते हैं, ताल्लुकात को मजीद उस्तवार करना चाहते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन का भी और बड़ी खुशी का मुसरत का इजहार किया कि मैं जब पहले इस्लामाबाद आई थी तो कुछ और समा था, और आज जब मैं इस्लामाबाद में मैंने लैंड किया है तो मैंने देखा है कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट, यहाँ लोगों की एक्टिविटीज, हर शख्स भागम भाग में है, कुछ न कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। Yes, Arun. So, Mr. Zhou, I want to ask you one question. You, as I know, you're working here since the last 4 years, and what is your feelings changing in Pakistan on the Cpec? Well, I think, yeah, I have been here for 4 years. You know, as a diplomat, you know, I think this is the best station for a Chinese diplomat. You know, this is because you know, we have a all-weather friendship. You know, we are iron brothers. So I think you know, in the past 4 years, I have you know, the honor and the pleasure of you know, witnessing the development of Cpec and China-Pakistan relationship. So I saw that you know, during these 4 years, you know, not only we are you know, our relations are not only strong, you know, in the political field. Now we are, you know, economically, you know, we have you know, more and more cooperation with each other. So from as Madame Zhao mentioned, that we also have moved from G to G to B to B to P to P to people-to-people relationship. Yes. So there's a great transformation. I think at the moment, maybe you know, because of you know, recently because of the devaluation of rupee, because of you know, the economic growth is coming down. So I think in Pakistan, you know, there is you know, a lot of people which is quite pessimistic about Pakistan's future. I think I want to see that Pakistan is a emerging economy, and Pakistan has a lot of advantages. For example, you know, the
cost of labor, the average salary, it is quite low. I believe maybe in the next 10 years you will enjoy this advantage. And also I think Pakistan has a lot of natural endowment. Here, Pakistan can be can have a very promising future if you can use your advantages well. This is the number one. I think people should have more confidence about the future of this country. Although we have some difficulties, but I believe these difficulties are just temporary. And number two, I think for Pakistan we should focus more on attracting foreign and domestic investment. So in the past 4 years, I have witnessed that Pakistan's economy was booming. Why you have this load shedding is part of the reason is because of your economy has been rising much faster than the electricity supply. So I think during this process Pakistan should pay more attention to the investment policy. Especially at the moment we should try to for example you can try to learn the best practice from China, from Vietnam, from Southeast Asian countries. So how to attract more foreign investment into Pakistan? We are facing too much problems here in our region, especially like with our neighbors. Sorry, it's our bad luck. Yeah. What's your next plan? Because sometime international community we are facing troubles. They are making troubles for Pakistan, especially they are using these type of words which I can't speak here. We need sometime the China aggressive tone or aggressive approach for Pakistan. We need sometime, but till now we are waiting your aggressive policy and your aggressive approach for Pakistan for betterment of Cpec and regional connectivity. Could I add Yes. some point for this one? Let me answer that question. Please. I think let me answer that one. Because as a China watcher, I first went to China when I was a student in FT College, Lahore. And that was over 40 years ago. And since then, I have made about 88 visits to China in different periods. I've seen the China of Chairman Mao, I've seen the China of Deng Xiaoping, I've seen the China of President Xi Jinping. China has always stood by Pakistan in its core interests whenever the situation arises, in whatever. And I think the issue is not the loudness of the tone, but the substance of the support. Okay. The substance of the support. Whether it's Pakistan's territorial integrity and sovereignty. Let's take Cpec. Yeah. China reposed, in my view, a vote of confidence in Pakistan in 2013 when no country in the world, neither a Muslim country nor a Western country, was willing to come into Pakistan. We had terrorism, we had economic problems. People were saying, oh, Pakistan, like Afghanistan, may be a failing state, or some kind of... Yes. China said, we are your best friends, we have always stood by it, and you have stood by us also, both sides. So we give a vote of... She knows also. Yes. Yeah. And they gave a vote of confidence at that time. And what was that? We were looking at IMF, World Bank, $500 million, $2 billion, $3 billion, $46 billion. Tekake. Yes. Khula. A 15-year project. Investment. Yes. 2015 to 2000 in 4 areas. Infrastructure, energy, Gawada port, special economic zones, social sector, every sector is covered. So that shows. So whether it's, and China gives us what I call air cover. In the UN Security Council as a permanent member, they try to penalize Pakistan, Jaish-e-Mohammed, China stood firm. Nuclear suppliers group, India wanted to be smuggled in by Obama, China stood firm with Pakistan. And when there was this Pulwama incident, China was very clear.
And you know what the JF-17 Thunder did. Yeah. I don't want to go into details. So you see, this is the key thing, that we also protect China's core interests. And China also protects Pakistan's core interests. And I think that is the resilient. I think this is a unique relationship in the annals of international relations. I'm a student of foreign affairs. I have never seen such relationship between two neighbors, unequal in size, with different social systems, with a consistency. China has never ever interfered in our internal affairs. There are countries who give you money, then they say, do this, do this. No, they never give you advice to do more work. That is the humility of China, and the sincerity of China, and the commitment of China. I think China stands as a special case, and we are very grateful to China for its support throughout the period, and we have also stood by China. In those periods when China was isolated, we were, as Chairman Mao once said, we were the window to the world. Thank you, Mr. Cpec. I want to add some point from Chinese side. I fully agree with you because China take Pakistan really just like our brother and sisters, because our just like the same fate for development and for the future. But now, what we think, especially the think tank, for your side, how do you make attractive or charming for all the investors we have to consider? Because China have the same experience in 1980s, you know. When the foreign investment starting, you have to have the very good policy. When I talk about the very good policy, that means you have to think the sustainable way, not बेनामी असासे और जायदाद आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। इन्हें जाहिर करें और हर किस्म की इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई से बचें। असासाजात जाहिर करने के ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 30 जून तक गैर जाहिर शुदा या बेनामी असासे जाहिर करें, खुद को और मुल्क को फायदा पहुंचाएं। मजीद तफसीलात के लिए SBR की वेबसाइट से रुजू करें। अपनी जायदाद और बेनामी असासे जाहिर करने का आखिरी मौका, सिर्फ 10 दिन बाकी। याद रहे, कहीं आखिरी तारीख गुजर न जाए। असासे और आमदनी जाहिर ना करना कानूनन जुर्म भी है और इस मुल्क के साथ जुर्म भी। अपने असासे डिक्लेयर करें और बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। बेनामी की बदनामी नहीं, नेकनामी कमाएं। असासाजात जाहिर करने के ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 30 जून तक गैर जाहिर शुदा या बेनामी असासे जाहिर करें, खुद को और मुल्क को फायदा पहुंचाएं। मजीद तफसीलात के लिए SBR की वेबसाइट से रुजू करें। अपनी जायदाद और बेनामी असासे जाहिर करने का आखिरी मौका, सिर्फ 10 दिन बाकी। याद रहे, कहीं आखिरी तारीख गुजर न जाए। not today you have some tax and tomorrow bye-bye. That is very dangerous. You need some thinking, the very good design at the top to think the way. Second one, I think for China, we will help you, Pakistan as a brother, to bring the industry chain, not only one company or one product. The chain means from the beginning until to the bottom. The whole chain you have to start thinking. But until now, I think we need to do more things. Because as you mentioned, the infrastructure, they started working, but now what happened for the individuals? What happened for the individual industry? We have to think like pharmaceuticals, like agriculture, like textile, all these kind of things. They must have the whole chain, like the information. Number three, I think for your side, have to learning from, I don't want to use in the best practice, but a good practice, at least, good practice. Then you have to have the 5 years plan. I like that one. Because no plan, that means you go everywhere. We trust the marketing driven, but at the same time, we also recognize the function of the government. This is important, the function of the government, combine
all of this together, then we will make things happen. Okay. Thank you. एक नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद साहब ने भी बड़ी अच्छी तरह उसकी वजाहत भी पेश की। मेरा क्वेश्चन ये था डिप्टी मिनिस्टर साहब से भी कि सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है या हमारे लोग, क्योंकि एक जज्बात भी होते हैं, पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है उसमें बड़े जज्बात का भी एक फैक्टर मौजूद है, बड़ी मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। तो कहते हैं जहां मोहब्बत ज्यादा होती है तो वहां गिले शिकवे भी होते हैं। तो मेरा एक गिला था, मैंने कहा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा कि जब लॉबिंग होती है हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सिक्योरिटी काउंसिल में जब कोई मूव होती है, तो हमें समटाइम एक चाहिए होता है कि चाइना एक एग्रेसिव यानी एक जारहाना हमारे हवाले से एक पॉलिसी रखे। तो कहा यह गया कि यही हमारी कोशिश होती है और हमेशा से हम जहां पर भी समझते हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में हो पाकिस्तान का दिफा करते हैं, FATF में जहां पर भी मौका मिलता है हम पाकिस्तान का दिफा करते हैं। और अभी भी FATF में 3 ममालिक हैं, आपने जिक्र कर दिया, चाइना, तुर्की और मलेशिया, जिन्होंने दीवार चीन की तरह डट के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने में और बेबुनियाद तरीके से, तो उसको मुकाबला वही कर रहे हैं। तो चाहे FATF हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, हमारी या कहा जाता है कि दुश्मन की जानिब से हमारे लिए जो है वो एक Cpec को सबुताज करने के लिए पता नहीं इतने करोड़ डॉलर्स रख दिए गए, 50 करोड़ डॉलर्स के बाद एक डेस्क बना दिया गया दुश्मन की जानिब से। काउंटर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी है? हम भी सर कोई 55 करोड़ डॉलर का डेस्क बना दें इनके खिलाफ? पैसे से नहीं होता, हाँ, ये दानिशमंदी और दलेरी से होता है। देखिए ना, आप 50 साल पहले फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे, प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर खारजा थे। हमने चाइना से दोस्ती की उस वक्त जब चीन बदतरीन दुश्मन था अमेरिका का। हमने अमेरिका का परवाह नहीं की, हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने कंटिन्यू किया मुखालफत के ऊपर। तो हम अगर फैसला कर लें, और Cpec जो उसी तरह है, Cpec has the same kind of commitment of the nation all across the board, all political parties, government, opposition, armed forces, media, civil society, as we had for the nuclear program. We have a national commitment that we will take it forward, inshallah, because this is the guarantor for a better tomorrow. Pakistan के रोशन मुस्तकबिल की अगर जामिन है इस वक्त तो Cpec है। आरो, go ahead. Mujahid Hossain sir, I want to know the past many years and America why fight with Iraq? The Iraq war of 2003 was based on a lie, on a falsehood. There was a claim, very short but intelligent question, that there was weapons of mass destruction. And they attacked and invaded Iraq illegally, immorally, unjustly, because the UN Security Council sanction was not there. We were part of the UN Security Council in Pakistan. We did not support the war. We opposed the war. And the Parliament of Pakistan passed resolutions. I was one who drafted those resolutions. So we are very clear. Now again they are saying about Iran. Yes. And they are saying the same thing about China. The US-China trade war is needless. It's avoidable. It's an attempt to bully China unnecessarily. And especially with Huawei, it's 5G. Because it's about control of science and technology in the digital world. If they cannot compete with them, then they are trying to deny them. Once upon a time, I've studied in America for 4 years, in Washington, D.C., in the Georgetown University School of Foreign Service. My field was international relations. America was a leader of free trade, against protectionism, against trade barriers. Open up. Now today, China is the leader of globalization. Xi Jinping's speech in Davos in January 2017, he said, if you are supporting protectionism, it is like locking yourself in a dark room with your mind and eyes closed. So the role reversal is there. So we hope the United States of America, yesterday was a very positive development. President Trump had a telephone talk with President Xi Jinping. They will have a meeting in Osaka at the G20 summit at the end of June, and we hope things will settle down, because this is needless. We cannot have a new Cold War. Whether Iraq, whether China, whether Iran. This continent of Asia needs peace, coexistence and harmony. And we can only move forward with cooperation. I call it the 3 C's, Dr. Saab. Corridors, culture and connectivity. Because after the second Belt and Road Forum, there was another conference in Beijing I went to in May. It was the conference on dialogue of Asian civilizations. It is very important. Both these things about people, what she said, P2P. BRI and Cpec is about
bettering the lives of the people, improving the lives of the people. It's people-centric development. And the Conference of Asian Civilizations is about people-to-people connectivity. And in that speech of Xi Jinping, he mentioned Ibn Battuta as the famous traveler. Oh. He mentioned Ibn Battuta. He mentioned Marco Polo. He mentioned the great mosque of Makkah. He mentioned that. He mentioned the Indus Valley civilization. So he mentioned about our region. He mentioned about Egyptian civilization, about our civilization. And he said there's a fusion of the Islamic civilization and the Confucian civilization. And China has benefited from that. So it was a very important speech. अच्छा मुशाहिद साहब, इन्होंने आरू ने जो है वो आपसे बड़ा शार्प एक क्वेश्चन किया इराक की वार के हवाले से. वैसे पैराग्राफ तो बहुत शॉर्ट सा था, लेकिन क्वेश्चन में डेप्थ बहुत ज्यादा था. इसी हवाले से अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि इस वक्त जो क्राइसिस है, हमें इस वक्त भी देखने में आ रहा है जो क्राइसिस आपके सामने, एक टेंशन है यूएसए और ईरान के दरमियान, एक टेंशन. इराक का हवाला दिया, उस वक्त भी आईएईए की रिजर्वेशन थी, उसके बावजूद वो अटेम्प्ट हुआ. फिर उसके बाद अभी भी आईएईए की रिजर्वेशन है, क्योंकि एक मुआहिदा भी हो चुका है ईरान के माबैन. तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और डेवलप कंट्रीज के अलावा जितनी तरक्की पजीर ममालिक हैं, क्या सिर्फ यही पाबंद हैं आईएईए की और दीगर इदारों की, या अब हालात बदलते जा रहे हैं? असर हाजिर के अब तकाजे ये नहीं रहे, जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा अपने ताल्लुकात को. अब वो वॉर्स नहीं रहेंगी, अब ये कोल्ड वॉर्स और ये नहीं, अब इकोनॉमिक वॉर का वक्त है. यही शी जिनपिंग का जो है वो एक विजन भी है. तो कहते ये बुरान मसनूई है. दिस इज एन आर्टिफिशियल क्राइसिस. वेदर इट्स द यूएस चाइना ट्रेड वॉर वो हो या ईरान का बुरान हो, क्वेश्चन ये है कि ना चीन ने ना ईरान ने कोई बैन अल-अक़वामी कवानीन, यूएन चार्टर, WTO रूल्स को वायलेट किया है. अब अगर आप एक बालादस्ती की बात करते हैं, शी जिनपिंग क्या कहते हैं? विन विन कोऑपरेशन. विन विन है, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट. There are no losers. मुश्तरका मफादात होते हैं. There are no winners. ये जीरो सम गेम नहीं कि जी we win and you lose. No, connectivity. हमने तो कहा है हिंदुस्तान को भी, इंडिया को भी, आप भी आए, सीपैक में आए, बेल्ट एंड रोड में आए, आपको भी फायदा होगा. सर, पाकिस्तान अथोराइज कितना है इस पूरे रीजन में? सीपैक में जो मजीद लोग ऐड हो रहे हैं, रीजन ऐड हो रहे हैं, ममालिक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, मॉस्को समिट भी लोगों को बड़ा परेशान कर देता है. तो कितना अथोराइज है पाकिस्तान? न्यू वर्किंग ग्रुप. बेनामी असासे और जायदाद आपको मुश्किल में डाल सकते हैं. इन्हें जाहिर करें और हर किस्म की इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई से बचें. असासाजात जाहिर करने के ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 30 जून तक गैर जाहिर शुदा या बेनामी असासे जाहिर करें. खुद को और मुल्क को फायदा पहुंचाएं. मजीद तफसीलात के लिए FBR की वेबसाइट से रुजू करें. असासे और आमदनी जाहिर ना करना कानूनन जुर्म भी है और इस मुल्क के साथ जुल्म भी. अपने असासे डिक्लेयर करें और बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें. बेनामी की बदनामी नहीं, नेकनामी कमाएं. असासाजात जाहिर करने के ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 30 जून तक गैर जाहिर शुदा या बेनामी असासे जाहिर करें. खुद को और मुल्क को फायदा पहुंचाएं. मजीद तफसीलात के लिए FBR की वेबसाइट से रुजू करें. World Cup 2019 live on PTV Sports. अपनी जायदाद और बेनामी असासे जाहिर करने का आखिरी मौका, सिर्फ 10 दिन बाकी. याद रहे, कहीं आखिरी तारीख गुजर न जाए. बेनामी असासे और जायदाद आपको मुश्किल में डाल सकते हैं. इन्हें जाहिर करें और हर किस्म की इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई से बचें. असासाजात जाहिर करने के ऑर्डिनेंस 2019 के तहत 30 जून तक गैर जाहिर शुदा या बेनामी असासे जाहिर करें. खुद को और मुल्क को फायदा पहुंचाएं. मजीद तफसीलात के लिए FBR की वेबसाइट से रुजू करें. न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, उसकी पहली मीटिंग बीजिंग में हुई है अप्रैल में. हमारी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, उनकी तरफ से उनके नायब वजीर खारजा मिस्टर कॉन्ग थे, और मीटिंग ये हुई है कि सीपैक को दायरा वसी कैसे किया जाए. सीपैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का नहीं है जी. सीपैक इज अबाउट द रीजन, कनेक्टिविटी, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया,
इवन गल्फ कंट्रीज, ईरान, अफगानिस्तान, सबको शामिल करें, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब तो सऊदी अरेबिया और यूएई भी आ रहे हैं गवादर में, बिकॉज ऑफ गवादर रिफाइनरी भी उन्होंने डॉलर की बात हो रही है। सो सीपेक इज द वे फॉरवर्ड। सर मेरा क्वेश्चन ऑथराइज कितने हैं, मतलब मुख्तलिफ ममालिक को अगर ऑथराइज कर दिया जाए कि वो इन रीजन के ममालिक वो है जो फैसले होंगे चाइना और पाकिस्तान बाहमी मुशावरत के बाद, बायलैटरल कंसल्टेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, आफ्टर कंसल्टेशन a consensus on the way forward. All decisions are taken through consultation, through consensus. And that is the spirit of Cpec. And that is why they have a JCC. There have been 8 JCC. Last time Beijing में थी, 9th अभी इस साल होगी. Joint Cooperation जो उनकी Coordination Committee है, उसमें सारे फैसले होते हैं. Decisions are taken, then there's a working group. So बड़ा एक पूरा professional mechanism है. हमारी Ministry of Planning है, China की है National Development Reform Commission (NDRC). Okay. So, Mr. Zhao, and as I know you will go back China, finish your job here. I hope he stays on. He's very, we want him to stay on. He's very popular. No, please don't send him back. He did a great job for the Pakistan and in Cpec. And what do you suggest for the Pakistan government and the Pakistan public in the future come in the Cpec? Yeah, I think Pakistan is, as I mentioned, Pakistan has a promising future, and we should have more confidence about, the prospects of the economy. I also mentioned that, Pakistan government can play a bigger role in facilitating the investment. So I think, this is if you say it's best practice or good practice, so there are already many examples to follow. So Pakistan should try to compare with, for example, the investment-friendly policies offered by other countries, so that Pakistan can also succeed in attracting more foreign investment. Cpec, so far, is also mostly is a investment. Pakistan has done a good job. So the next steps, I think, Pakistan should be, focusing more, energy on implementing the next steps for Cpec. Senator Musharraf Hussain has explained this 3 new sectors, 3 new working groups we have set up, in industrial development. We also set up a new working group on social sector development. We also had international cooperation. International cooperation. Of course, we are also trying to start agricultural cooperation under the Cpec. So we should try to move in all these areas. The government can play a big role because in China our experience is that the government should try to plan it accordingly. Just as Madame Zhao mentioned, that you should have a plan not only for next month, for next year. You should have a plan for 5 years. A 5-year plan, and also a 10-year plan, a 50-year plan. China has that plan, and then you can have a vision. When you are offering the policies, when you are making the policies, so where those policies will take Pakistan to, and I think if Pakistan can manage the next steps of Cpec well, I think this will be a great boost for your economic development, and it can also help to attract foreign investors from other countries. I think this Cpec is also about the jobs, because all these sectors I mentioned that you need to. You can bring more jobs to the people by, for example,
moving, those manufacturing, industries to Pakistan by setting up more faculties in Pakistan. So in this way, it can help people to find more jobs. It can improve the living standard of the people, and it will generate, a much bigger domestic market in Pakistan. I think, after serving in Pakistan for 4 years, I have, a lot of confidence about Pakistan. Pakistan will be, I think, a great nation, and you have a huge population here, and you can offer good policies to turn this population to a dividend, and it can help the economic development in many ways. Sir, I think in the next step, it's a business to business is very important, because the business can create a lot of jobs and also create good circles for the economic of the Pakistan. So in this sector, what do you think about what kind of business can bring to the Pakistan? Could I say something? Oh, please. This morning we have a very interesting meeting with 10 senators come together from different parties. We're doing a very interesting investigation needs, because the needs assessment are so important. We met your Prime Minister in the forum in Beijing, and today we listened to the senators directly. And very clearly, I think the strategy was very, very correct. Very good meeting this morning. They mentioned, first one, the infrastructure, China give a great support. Now it seems to them have the shape. We only say it's a shape. But now we need to know, we need to understand what is the needs from the people. So the agriculture become a very important one. The new modern manufacturing. They need like a pharmaceutical industry, textile, etc. They also mentioned education. Okay. So for the education sector, I want to say something. I living also in the Germany, and I have experience in China. And for the education, I think the Germany do the good job, even better than China. And they after four class, the children were separate. Only 10% they will go to the high school, then go to university, and less than 90% they will go to city, city schools, and after that they will to be the technology workers. So in this sector, the Pakistan, they always say, okay, investment coming, but I think their labor, they have a big, public. And they have large laborers need a job, but they don't have a technology. Yes. And so today the senators, and today the senators mentioned this. Okay. Because the education is not only talk about children, even the adults. The adults, they need learning more, because the new revolution, they need learning a lot of technology, innovation, etc. So what is the suggestion today? The senators mentioned that if in China can help them to have the training for the government people, or for dialogue for the government people, they can learn how do you produce the 5 years plan, about how can they do the investment, etc. Also set up the workshop for the skilled laborers, for the workers. How do you learn about new technology? And they also suggested maybe have something, need talk for the training for the society. What you can do? Something we can learn from Pakistan too, because today we see your constitution history. Fantastic. We should learn from you. So that means the dialogue, people learn each other equally, and also learn each other, and put all the efforts, they are intelligent, everything together. So when we talk about the shared benefits, it's not only share about the money, about the economical result, but share the knowledge, even the lessons. This is today, I think the meeting was very good.
Madam Cpec, excuse me, yeah, because thank we you. don't have that much time. We want discussed more and more, but ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ون لائنر آپ سب اس پہ اس کا جواب دے دیجیے گا. وی نو آل ورلڈ وی جنریٹ many sources, income generate, like potential in agriculture, potential in lot of many sectors. But the most important is tourism. How we improve our tourism, because the tourism is the most important factor to generate our income. What potential? بینامی اثاثے اور جائیداد آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. انہیں ظاہر کریں اور ہر قسم کی انکوائری اور قانونی کارروائی سے بچیں. اثاثہ جات ظاہر کرنے کے آرڈیننس 2019 کے تحت 30 جون تک غیر ظاہر شدہ یا بینامی اثاثے ظاہر